Hello students, welcome to Scientia classes. Today, today our topic is gene expression. First of all, I'll tell you the Scientia classes processes. In these Scientia classes, we discuss biological things, biological concepts, and scientific things. Their biological concepts we'll discuss here, and for conceptual understanding. So let's begin this class. Here my name is Abhishek, and today's topic is gene expression. I can explain here the whole gene expression processes here, and this is the overview about the gene expression. After this class, if you guys need PDF notes, I can provide the PDF notes. You can just comment below. This is gene expression overview. First of all, we need to know what is gene expression process. What is gene expression? So gene expression is the process by which information in DNA is converted into a functional protein. So what does it mean? It means that inside the every cell there is DNA is there, which have the information, which have the genetic information to make a protein, right? So there is a process of making protein. This overall process is called center dogma. The process is what? The process is that there is a DNA into RNA, RNA to protein. First, the DNA stores the genetic information, and after that, the RNA, that is RNA will copy the DNA. That is information will copied into DNA into RNA, and after that RNA will make a protein, that is polypeptide chain. This whole process will called the center dogma, that is proposed by Francis Crick. Now, in the gene expression process, here the DNA is there in the diagram. DNA into mRNA. This process is called transcription process. In this transcription process, the DNA has the genetic code that will make protein, which is copied by mRNA, that is messenger RNA, and there is a helper also there. The helper enzyme is there, which can help to copy the DNA. The enzyme is called RNA polymerase enzyme, which can help to copy the DNA, to copy that information, that genetic code information, which will after that need a mRNA, that is messenger RNA. After this messenger RNA, the messenger RNA will go outside the nucleus, and that is in cytoplasm, where it can make where it can meet with ribosome. Ribosome is like a protein making factory, where ribosome will decode the mRNA, and mRNA will make a protein, that is polypeptide chain, through the process translation. So this DNA to RNA, that is transcription process. This process is called transcription. After that, RNA to protein, that is translation process. So first we need to understand that what is transcription. So transcription is the process of copying genetic information from DNA into mRNA. So what does it mean? It means that transcription is the first step in center dogma, where mRNA will copy the information from DNA, which will make after that for synthesizing the protein, for synthesizing the polypeptide chain, and this process is called transcription process. The copying process is called transcription process. It occurs in eukaryotes in nucleus and in prokaryotes in cytoplasm. After that, the transcription process is divided in three parts. There is a steps of transcription. First step is initiation, second step is elongation, and third step is termination. Here is the diagram of transcription process. In this diagram, there is first step is double-stranded DNA is there. This is double-stranded DNA. Here is the template strand, here is the promoter region, and here is the coding strand.
This is the coding strand. This is the template strand which will copy after this step. This is the template strand. This is the promoter region. After that, RNA polymerase is a helper. It's like a helper of DNA, which can copy the information, the the genetic code. Um, it can copy. It's like a enzyme, and it's this RNA polymerase enzyme will bind the promoter region. It can bind here, and after that it will separate the DNA into separate sites. The DNA on unwound here. This is the separate strands. After this step, the mRNA being formed. After that, it will clip the one strand of DNA, a portion of DNA. It will unwound, and after that, mRNA being formed. This is the single-stranded mRNA is there. The single-stranded mRNA is separate, and after that mRNA is formed, being base pairing system. There is a base pairing system. Base pairing system is like AUTACGGC. This is the adenine to adenine uracil, thymine, adenine, cytosine, guanine, cytosine. Now here is enzyme is the RNA polymerase. Enzyme will use here the RNA polymerase. Now this is the process of transcription process. Now after transcription process, after mRNA will made, the translation process will begin. This is the translation process. This is the translation process where mRNA to protein will make. First of all, what is translation? Translation is the process by which mRNA is decoded to form protein, right? So after mRNA made, mRNA will go in cytoplasm. There is a ribosome is there who can meet with ribosome, and ribosome will decode that mRNA with the help of tRNA. There is also tRNA is also there which can help ribosome to decode to make a amino acid chain. Right. So translation is the process by which mRNA is decoded to form protein. It occurs in ribosome, that is cytoplasm, in the cytoplasm area. After that, the ribosome will decode the mRNA. This is the diagram of ribosome where it can decode the mRNA, and from the mRNA it can ribosome can decode the triplet codon. Here is the triplet codon in mRNA. These three letters, like three nucleotides, will make one codon. This codon will This codon will decode by ribosome and tRNA. It can translate and brings amino acids. And after that, this in this slide, this is the basic genetic code concept is there. What I can previously say that these three letters, these three codons three nucleotides will make triplet codon. So this is here. This is the three bases like. So this is the three bases. Three bases will make one codon. That means three bases make like a three separate nucleotides will make one codon, and one codon will make we called it one amino acid. Right, here is the example is there. This is AUG, this is adenine, uracil and guanine. These three will make methionine. Methionine is the amino acid. This is the start codon, and it is discovered by Marshall Nirenberg. He can discover these three bases and one codon will one amino acid. He can discover it. After that, we can learn here steps of translation. So here is the steps of translation. First step is initiation, as it is as a transcription. This is the transcription. After that, elongation, and then termination process. This is the diagram of the steps. Here is the ribosome. Ribosome will decode the mRNA, and the tRNA will help to transfer that sequence. And after that, it will happen in
cytoplasm area. Here is the diagram, and it can translate that sequence that a code after decoded, it can make a long chain. Ribosome will read, ribosome will decode the sequence, and after that it can with the help of tRNA, it can translate, it can make a long chain of amino acid. After that, long chain of amino acid, after the long chain, it can make a polypeptide chain falls. After a chain, after sometimes it will fold, it will make a fold like structure. Here you can see that they make a form a functional protein. Here is the some structural levels are there in the protein. There is some structural levels are there after the chain made. There is structures are like primary structure, secondary structure, tertiary structure, and quaternary structure. This is the primary structure. The first diagram is the primary structure, and in this primary structure, this is like a linear chain. And after that, this is the secondary structure. This is like a helical shape like a structure. This is the secondary structure of protein, and this is the tertiary structure, and this is the quaternary structure. These are the structure of proteins after folding. So here is the summary complete gene expression. Here is the overall thing is there. DNA makes pre-mRNA. After that pre-mRNA will make mRNA. So this process is called transcription process. After that, mRNA to polypeptide chain and polypeptide to functional protein. This process is called translation process. Right. So now here is not the end is here. Now I can explain it in Hindi. A short story is there which can help you to understand the process of gene expression overall. So now here is the story is begin here. So here is the thing is that now I can explain a short story about gene expression. Just listen carefully in Hindi. I can talk in Hindi right now. So a story is there. एक स्टोरी है, स्टोरी का नाम दे देते हैं, स्टोरी का नाम दे देते हैं डीएनए फैक्ट्री. ओके, सो डीएनए फैक्ट्री होता है. उस डीएनए फैक्ट्री में एक ऐसा मान लो डीएनए फैक्ट्री है. और डीएनए फैक्ट्री कहाँ पे है? एक सेल है, छोटा सा टाइनी सेल है. टाइनी सेल के अंदर एक एक रूम है. उस रूम का नाम दे देते हैं न्यूक्लियस. अब उस रूम के अंदर बड़ा सा चैम्बर के अंदर बड़ा सा एक टाउन मान लो, एक सेल के अंदर ऐसा है कुछ जिसके अंदर डीएनए रहता है. ठीक है, एक चैम्बर मान लो, न्यूक्लियस एक चैम्बर है. उस चैम्बर के अंदर एक फैक्ट्री है जिसका नाम दे देते हैं, न्यूक्लियस का नाम दे देते हैं. जैसे कि एक लाइफ फैक्ट्री है जिसके अंदर लाइफ बनता है लाइक दिस. और उसके बाद उसके अंदर जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए रहता है, डीएनए को हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि डीएनए एक बॉस है उस फैक्ट्री का. ठीक है, तो डीएनए एक बॉस है जिसके पास है रेसिपी. मतलब सेल को चाहिए होता है प्रोटीन. राइट, तो सेल को अगर प्रोटीन चाहिए होगा तो प्रोटीन बनाने के लिए भी तो किसी को चाहिए ना. तो प्रोटीन बनाने के लिए जैसे कि डीएनए है, तो डीएनए बॉस है उस चैम्बर का. न्यूक्लियस एक चैम्बर है, उसके अंदर डीएनए बॉस है. तो वो क्या करता है, उसके पास सब इंफॉर्मेशन, सब रेसिपीज है, कैसे बनेगा, कैसे प्रोटीन फॉर्म होगा, उसका पूरा उसके पास है. तो लेकिन डीएनए का एक प्रॉब्लम ये है कि वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा सकता. वो अभी अगर सेल को एक दिन क्या होता है, सेल को प्रोटीन का जरूरत पड़ता है, तो डीएनए अभी न्यूक्लियस से बाहर जा नहीं सकता. तो डीएनए क्या किया, उसने अपना जो रेसिपी बुक है, उस रेसिपी बुक को ओपन करता है. ओपन करने के बाद अभी अगर वो बॉस है तो उसका कोई हेल्पर भी तो होना चाहिए ना. तो ऐसे ही हेल्पर है उसके पास. उसका हेल्पर का नाम है आरएनए पॉलीमरेज. अभी आरएनए पॉलीमरेज आता है और बहुत अच्छे से उसको कॉपी करता है. वो जो रेसिपी बुक निकालता है, वो जो कोड या फिर कोड बोल लीजिए या फिर जो सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, वो मतलब पूरा निकालता है, ऐसे दिखाता है कि ऐसा है. तो बहुत केयरफुली
जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है, उसको डिकोड करता है, उसको कॉपी करता है, राइट, कॉपी करता है। कॉपी करने के बाद वो एक मैसेंजर की तरह बन जाता है, लाइक एक मैसेंजर आरएनए बन जाता है, ठीक है। उसको वो डीएनए के पास से पूरा एज इट इज कॉपी करता है। कॉपी करने के बाद वो एमआरएनए बन जाता है। एमआरएनए अब क्या करता है, एमआरएनए विल रेडी टू गो आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो एमआरएनए आउटसाइड, यहाँ तक जो एमआरएनए बना है, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। फिर इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद एमआरएनए जाता है, एमआरएनए जाता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जहाँ पे जाके उससे मीट होता है एक बड़ा सा मशीन से, जो मशीन होता है राइबोसोम। लाइक राइबोसोम को आप ऐसे मान लो कि राइबोसोम एक इट्स लाइक प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन मेकिंग मशीन, एक मशीन मान लो जहाँ पे प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो राइबोसोम से मीट होता है एमआरएनए का। एमआरएनए का राइबोसोम से मीट होने के बाद अभी राइबोसोम क्या करता है, एमआरएनए को डिकोड करना स्टार्ट कर देता है। उसमें से मतलब चुन चुन के निकालता है कि कौन सा सीक्वेंस उसको चाहिए, जिस सीक्वेंस के जरिए वो प्रोटीन बना सकता है। तो राइबोसोम का एक प्रॉब्लम ये है कि वो एट वन टाइम एक बार में वो 3 लेटर पढ़ पाता है। 3 लेटर पढ़ पाता है मतलब जब दिस स्टेप सो यू हियर दिस स्टेप, वो राइबोसोम क्या करता है, यहाँ पे ट्रिपलेट कोडन जो है वो एक बार में 3 ही लेटर को पढ़ पाता है, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड को एक बार में पढ़ पाता है, जो 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक एमाइनो एसिड बनता है, राइट। तो वो अमाइनो एसिड को अभी क्या होगा, वहाँ उसको एक हेल्पर का भी, यहाँ पे भी राइबोसोम को भी एक हेल्पर का जरूरत पड़ता है। तो वो हेल्पर जो है, वो हेल्पर है टीआरएनए। टीआरएनए हेल्प करता है, जैसे कि राइबोसोम 3 लेटर को एक साथ पढ़ता है, मतलब एक अमीनो एसिड को लाता है, एक अमीनो एसिड के एक बार डिकोड करता है, ठीक है। दैट इज मिथ्योनिन, दिस इज द स्टार्ट कोडन। फिर उसके बाद टीआरएनए क्या करता है, उसको जोड़ने का काम करता है, उसको ट्रांसलेट करने का काम करता है, ठीक है। तो वो ट्रांसलेट कर करके एक लंबा सा चेन बना देता है। जो लंबा चेन बाद में जाके एक फोल्ड ले लेता है, एक फोल्ड ले लेता है, और बहुत कुछ 3 या फिर 2-3 फोल्ड्स फैलता है। जैसे कि पहले तो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर रहता है प्रोटीन का, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो हेलिकल टाइप में रहता है, फिर उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर आता है, फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आता है। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे स्टेप्स फॉलो कर करके जो डीएनए जो है, डीएनए के बाद जो है वो प्रोटीन बनता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जीन एक्सप्रेशन। तो हम लोग इस ओवर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि डीएनए के बिना प्रोटीन बनना इम्पॉसिबल है, और प्रोटीन के बिना सेल का रहना पॉसिबल नहीं है। मतलब विदाउट प्रोटीन देयर इज नो लाइफ। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो ये था आज का पूरा प्रोसेस, पूरा जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस है। और जिसको भी पीडीएफ नोट्स चाहिए वो कमेंट करे, मैं टेलीग्राम में अवेलेबल करा दूंगा नोट्स इसका। यही नहीं, इससे और बेटर पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, जहाँ पे पूरा ओवरऑल प्रोसेस, ओवरऑल थ्योरी पूरा रहेगा। ऐसा पीडीएफ है, मैं भेज दूंगा इस टॉपिक को लेके। सो थैंक यू सो मच फॉर watching. Like, share, comment and subscribe for more biological topic notes, videos and contents. Thank you so much.